So yeah, so whenever Scorpio like no fights, so we have done Aries, Taurus, and explain you why Sagittarius second house, how it works. So how is the like ninth house of the second house में तो ये सब points अपने लिख लेना. So yeah, now the Gemini. Gemini part is curiosity in the eighth house. So yeah, very secretive persons. like ना their belief is कि अपना information बाहर नहीं जाए, छुपा के रखो, कम से कम secret information. So yeah, there is like whole thing of spies, jasus. So yeah, Scorpio has a very good thing with jasusi. ठीक है. या जेमिनाई ऐसा लाइक ना इसलिए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ज्यादा है रादर देन अपफ्रंट होकर के लड़ना जिस तरह से एरीज लड़ता है. लाइक ना मारो या मारो, दैट इज होल सारा लाइक ना फोकस बाहुबल पे, हैंड्स के स्ट्रेंथ पे. बट जेमिनाई का लाइक स्कॉर्पियो का सारा स्ट्रेंथ है कि बिना लड़े कैसे मारना, एक शकुनी. तो वो बोलता है ना कि युद्ध की रणभूमि में लड़ने से पहले मन की रणभूमि में लड़ना जरूरी है. दैट इज व्हाट जेमिनी इन एट्थ हाउस मींस. यू स्ट्रेटेजाइज, यू प्लान थिंग्स. ठीक है. व्हाट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग? दैट इज सजिटेरियस. इट्स स्ट्रेंथ. स्कॉर्पियो का स्ट्रेंथ है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, बहुत आगे तक की सोच के चलना. तो फिर ये वो लोग जो लाइक दो लोगों के बीच में जैसे लड़ाई करवा रहे हैं, किसी को कुछ बोल के किसी को कुछ बोल के, वो वाला पैटर्न. या इट कुड बी कि ये लड़ाई करा सकते. या शकुनी काइंड ऑफ थिंग. So yeah, Gemini, this thing, Gemini third house, eighth. अब now eighth naturally third house जो है, जो कि fear का sign, like fearlessness चीज है. like तुमको जब मैं Gemini पढ़ा तो मैं समझा रहा था कि तुम्हारा जब Mars is in third house, you become very courageous. Because why? Because जो third house है, that is gonna destroy the sixth house from you. तो जब भी मार्स यहाँ पे बैठता वो 1 2 3 4 5 6 सिक्स पोजीशन को डिस्ट्रॉय करता. एज आई टोल्ड यू कि मार्स अगर लगन में बैठेगा तो वो अपने से सिक्स हाउस की कमर पतली हो जाएगी. तो somebody वो ऋषि सिंह की कमर पतली हो जाएगी, मींस सिक्स हाउस इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड. एंड व्हाट इज हैपनिंग कि अगर मैं इसी तरह से मार्स को इसमें बैठा दूं तो व्हाट विल हैपन, दिस हाउस विल गेट स्मॉलर. सो हिज फियर गोना गेट स्मॉल. लेकिन ना उसका फियर का फैक्टर कम हो जाएगा, करेज ज्यादा हो जाएगा. एंड नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर जेमिनी उठ करके जो थर्ड हाउस ओरिजिनल थर्ड हाउस है वो उठ करके इसमें आ जाए तो एट्थ हाउस में ही बैठ जाएगा. नाउ फुल करेज इज इनटू द एट्थ हाउस. तो करेजियस लाइक ना करेज के भाव में अब एक मिस्ट्री थिंग है. मिस्ट्री थिंग इज कि इट कुड बी एनीवेयर. like these people could be courageous or not be courageous at all. like they could be like a very fearful person, like जिनको बहुत ज्यादा डर लगता हो, या could be जिनको कोई fear ही नहीं. ठीक है. तो वही कि आतंकवादी भी इसी में इंक्लूडेड है. and those people who are very psychologically fearful also are included in this same thing, because Scorpio has this nature of unknowingness. किस तरह साइड में पलटा होगा. so what, there is this transformation involved in there. Okay, this transformation is involved in there कि वो किस साइड में होगा. ठीक है. so yeah, having this thing Gemini in this, so it's a again something that is Scorpio लगन होते you know कि like ना मकरी के लिए या Gemini भाई बहनों के लिए it's a problematic house. So yeah, because their Gemini is getting transformed, their siblings का life transform हो रहा है. And that will be always opposite to it. like कि अगर आपका उत्थान हो रहा है तो उनका पतन होगा, आपका पतन हो रहा है तो उनका उत्थान होगा. That is the relationship between Scorpio and Gemini. And yeah, Scorpio has this issue with the skin disease and all that. ठीक है. Skin disease का problem होना एक वो चीज है कहीं ना कहीं. And then this thing of having issues with their siblings.
like now vaso siblings. अब देखो Scorpio लगाने तो you know the sibling is, so you have to pick out other things from the chart to get to know कि what is the exact problem with this sibling. Exact problem in the sense कि like moon Mercury का combination तो नहीं हो रहा, ठीक है. Mars का, लेकिन Mars is not getting influenced by Mercury or some into that position. Then you know यार इसके भाई का कुछ issue रहा है, major issue है, ठीक है, something like that. Okay. सर ने ऐसे बताया है कि स्कॉर्पियो को ना अपनी लाइफ में अपने सिबलिंग का हमेशा जिम्मेदारी लेना पड़ता है, तो वो क्यों है जबकि इनका तो सिबलिंग 8th हाउस में जा रहा है. नहीं, जिम्मेदारी में नहीं कहूंगा लेना पड़ता है. इट्स जस्ट दैट कि देयर लाइफ, उनका सिबलिंग का लाइफ ट्रबलसम होता है, ठीक है. एंड दे हैव दिस थिंग ऑफ 1-6 इन देयर सिबलिंग्स, लाइक ना एक 8 का रिलेशनशिप या एक 6 का रिलेशनशिप बनता है विद देयर सिबलिंग्स. सो या अगर आप कोरस लगना और आप सही सलामत तो समझ जाओ कि आपका भाई गया गया हुआ है. Yeah, he would be like na something would be like na into issues. So yeah, if you help your brother keep it well, so yeah, definitely uska take care hone se that would somehow bring that mass up in your chart. Okay, mass ka quality up rakhega and it would help you in greater goods in that way. Not in the sense of responsibility. It would only be happening when like na you got Gemini in the second house or Mars in the second house. Or Mars in Taurus, obviously, any planet in Taurus. So that will, you take care of your siblings' expenses. That could be one thing. Third house, Gemini, to brother ka expenses. That could be a possibility. बट इनका रिलेशनशिप कैसे बताएंगे हम सिबलिंग के साथ, क्योंकि सिबलिंग 8th हाउस में जा रहा है इनके लिए. तो सिबलिंग 8th हाउस रिलेशनशिप देखो कभी भी होगा वो 3rd हाउस ही होगा. आपका संबंध आपके भाई बहन से कैसा होगा ये 3rd हाउस से डिसाइड होता है, ठीक है. जेमिनी इन जनरल इज योर लाइक एज अ समझो कि भाई बहन का लाइफ पैटर्न में कुछ भी हो रहा है तो दैट इज जेमिनी, समथिंग कमिंग फ्रॉम जेमिनी. हाँ, अगर सैटर्न इस केस में लाइक यू गेट केतु ओवर हियर 3rd हाउस और सैटर्न गेट्स डेबिटेटेड इन द 6th हाउस, समथिंग लाइक दैट हैपनिंग, ठीक है. देन यू से कि हाँ लाइक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, ठीक है, हैविंग सम इशू, रियल इश्यूज विद योर सिबलिंग्स, ठीक है. तो हम जरूर कहेंगे बट as such Saturn will be the key to here for the relationship with your sibling. Mars will be another key for that, ठीक है. Mars अगर 10th हाउस में है, ठीक है, और या एरीज में रहेगा तब भी प्रॉब्लम ही करेगा, ठीक है. 3rd हाउस में है तो इट्स अ गुड प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ विल गिव यू गुड मार्क्स. और इसमें हम ये क्यों नहीं कह रहे कि इनका कोई लाइक हिडन सिबलिंग है या कोई वो है, ये वाली चीज, ये वाला थीम क्यों? मतलब हिडन सिबलिंग कैसा होता है? क्योंकि 8th हाउस में सिबलिंग का साइन चला गया इसलिए पूछ रही है ना. 8th हाउस में सिबलिंग का चेंज हो गया. So sometimes you don't know that you have another sibling. Okay, you mean कि वहाँ we didn't knew कि मेरा कोई भाई था या something like that. हाँ, मतलब जैसे या तो हो गए हो या जो भी हो, आपको पता नहीं होता कि आपका एक सिबलिंग है. That could be happening. Yeah, that is a possibility here. That is actually a possibility here. करण और पांडवों का वो था ना, लाइक करण was actually their sibling but उन्हें नहीं पता था. Yeah. Very good example. Yeah. We can have this thing. Let's see where is Karan. तो करण स्कॉर्पियो असेंडेंट था क्या? नहीं, ये नहीं पता. युधिष्ठिर, इनमें से कोई किसी को तो होना पड़ेगा स्कॉर्पियो. Will come to nakshatras. Where only nakshatras can actually tell you which is the true story. So yeah, करना का सबसे मेन थीम है कि पहले की परिवार नहीं था, ठीक है. Having lost of this name, maybe probably Karan could be this thing. Scorpio. हाँ राइट, ये करण का ही होना पड़ेगा. बिकॉज उसके सारे ही सिबलिंग्स वो है ना.
Yeah, he gets inheritance में राजपाट में मिलता है, so are getting a lot of inheritance. Yeah, और could be. धर्म के उस पे चल रहा था बिल्कुल, बिकॉज हाँ, yeah, वो yeah, धर्म के उस पे yeah. चल रहा था ना, बिकॉज दुशासन ने उसको वो मान और वो सब दिया था, तो ही सेड आई विल फाइट अगेंस्ट माय ब्रदर, गिवन माय गॉड. Probably, yeah, probably could be. This could be Anuradha. Anuradha Nakshatra. That could be. I would have a detailed check on that. I can have a look on this thing सॉरी आई because मिस्ड इट. क्या अनुराधा नक्षत्र का क्या बताया? he cannot be Jeshta. He wasn't Jeshta Nakshatra. He could be Anuradha. Anuradha should be the one because mother ने छोड़ दिया, पहली बात तो mother का सुख नहीं था, ठीक है. Then one thing, then inheritance about like ना पूरा अंगराज उसको ऐसे ही दान में मिल जाता है, something getting that. Then friendship का बहुत होता. So if I see his third house, we get Duryodhan over there, Capricorn. So yeah, friend is Capricorn. And having this issue with the siblings, eighth house, secret siblings, and this one number problem with the identification. Okay, and problem with the name also, Gemini. Yeah, it could be Anuradha. I will have a check on that. Yeah, very good example. But, so yeah, it could be a possibility of having this thing also. But we need some like ना फिर देखो ऐसे cases के लिए you need some retro planet or Rahu thing because ये unusual case है. Okay, if you get Rahu Gemini in this thing, then I would probably say कि something, yeah, something like that. In general trend scenarios like not having retro planet over here and not having any Rahu thing over here, then I would probably not go this extreme cases. Simple छोटे cases में हो जाएगा. Okay. So yeah, that you need to keep in mind. We need retro planets or Rahu things happening this way so that we can get that peculiar cases. So yeah, this way we cover the Gemini. So yeah, इज्जत बहुत important है, like ना fourth house Cancer, like ninth house Cancer again, peace नहीं है. Ninth house is something that is only coming from peace. Always comes from dharma, gurus, religion, following the tradition and following the law and all those things. Okay, whenever these people don't follow their law or things इनके लिए थोड़ी सी अच्छी नहीं होती. तो पीस ऑफ माइंड नहीं है. एंड जनरली इट्स अ सिक्स रिलेशनशिप. ठीक है, मदर का जो ओरिजिनल साइन है दैट इज हैविंग सिक्स रिलेशनशिप लाइक फ्रॉम द फोर्थ, एंड जो 11th नंबर साइन है वोट करके यहाँ बैठा है. तो शांति नहीं है इन द सेंस कि अगेन देयर इज लाइक शांति के साइन में देयर इज एक्वेरियस. ठीक है, एक्वेरियस थिंग मींस you are very much oriented some goal towards a goal. Whenever this thing with Virgo and Aquarius is they are very oriented towards this one particular thing. ठीक है, इसीलिए शांति नहीं. स्कॉर्पियो और वर्गो दोनों ही लाइक स्कॉर्पियो में शांति नहीं कि आप जीवन बदलने की, आप अपने आप को बदलने की चेष्टा में, ये भी समझो. तुम हर बार स्कॉर्पियो ऐसे समझो कि तुम भी तो स्कॉर्पियो 12 राशियों में तुम भी आते हो और हर राशि का एक लिंक तुम्हारे अंदर में भी है. तो whenever there is Scorpio getting up onto your head means you are not satisfied with something and you want to change, and that change is a Scorpio. Okay, you want to change things maybe around you or maybe within you. Okay, and that is why Scorpio is that whole transformation thing is onto your head, and तब चैन नहीं होगा. एंड जब अगर चैन है तो आप फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहेंगे. यू विल लाइक ठीक है, चल रहा है सब बढ़िया. एंड एज सून एज स्कॉर्पियो यू गेट इट, यू लॉस्ट दिस चैन. एंड हाउ विल यू गेट द चैन, दिस बेचैनी का लाइक ना उसका समाधान क्या है? आइदर नंबर 1 बाय ट्रैवलिंग. ठीक है, ट्रैवलिंग मींस यू जस्ट 9th house thing. You go to other places, you look for things, you travel, or through following some religion, moral principle things, dharma, or learning.
probably 9th house learning also, because that would enhance this thing. इसी से शांति होगा, that is something else. तो बेचैन व्यक्तियों को काउंसिल करने से लिखना, that is something helping them in terms of this thing. Yeah, but Scorpio has this Rahu thing, बेचैनी बहुत ज्यादा हो जाए शरीर के अंदर में, और they want to be driven with this thing. Okay, so that is something 9th house moon is there. So yeah, it's a 9th house. तो अभी आने वाला है आगे चल करके next week में हम लोग करेंगे. We will elaborate more on that. 10th house will elaborate more on that. Virgo, we will this. Let's leave this. We'll leave this. We'll come back to Scorpio. Scorpio again, second house. Scorpio is the head, but Scorpio को study कर रहे हैं, तो basically हम लोग और aspects को देखेंगे. So yeah, one thing is कि peace जो है, that is getting from Aquarius things. So yeah, groupism लिखना. Aquarius, Scorpio के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है groupism. Forming this NGO kind of situation, or people with same belief system. Because 9th house is the original belief, and I said you again, friends बनाते हैं. So anything third from it will be the friend of that. So 9th से अगर third में जाऊँ, तो that is Aquarius, natural Aquarius, that is friend of your belief system. Aquarius is friend of your same beliefs, like ना, इसलिए जो same belief in the sense कि you believe in goodness, probably helping others. So yeah, you will get into a group of these kind of people, and over there, like being in the group helps them to think like same agenda, same work. They are doing the same thing. क्योंकि एकांकी होना, that is a issue with them. एकांकी मतलब being a single, one-handed, one thing. It's a kind of difficult from them because it's going to the 6th house. So yeah, it's better. Scorpio people will be the one who will try to find allies, trying to like ना, जैसे तुम कभी देखो America always try to find allies. ऐसा नहीं हुआ है कभी भी इतिहास में कि अमेरिका would go alone, like ना एक तरफा चला जाए. He tries to make allies with a lot of people, and then he tries to do the work that he wants to do. Yeah. Then we have Capricorn thing, third house Capricorn. So yeah, again Gemini thing, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yeah, the Capricorn जो original 8th का वो है, that is getting settled into Gemini. So yeah, so now the work or profession or the karma that is related something very closely to the sibling. Okay, karma is related to sibling. That is one point. Then again, a karma of change. So the Scorpio में आपका like this change of place because of work. That's so simple. Transfer. So transfer is related to Capricorn third house. It coming. So yeah, transfer brings you a whole lot of transformation. That is why it's called transfer. Transfer is a part of transformation. Big transformation comes when you get transferred. So yeah, a whole lot of changes that is going to happen. So yeah, if you understand, every sign placement over here is actually having this 1-8 or 1-6 relationship. इस sign में ना देखो लिब्रा यहाँ होना चाहिए था, उठ करके यहाँ पहुँच गए, वहां से लेना 8, हर कुछ अपने से उल्टा में हो गया. नंबर पे गिर गया है, जेमिनी जहाँ सब कुछ उल्टा है बेसिकली. तो यहाँ पे कोई चेष्टा ही बदलने की है, लेकिन every inch of it is saying to change. Every भाव में बदलाव आ गया. Like so, see Pisces used to be here, come down to here. Leo here, come down to there. Every opposite relationship is there. Every opposite. हर तरीके से. So yeah, so whole thing of you is now like a body as you are line with this. You want to do something or become something or achieve something so badly that you are like na, every placement, every ang bhadka, that is something that is with Scorpio.
तो या एवरी विपरीत परिस्थितियां, सो चैन नहीं है, चीजें हैं इस तरह से. पाइसन इज देयर इन टर्म्स ऑफ पाइसन बी. अच्छा, तो बहुत देखो, एक स्कॉर्पियो का एक बहुत बड़ा चीज जो कि स्टेबलाइज्ड वे में आता है, स्टेबलाइज्ड वे में आता है, is to transform others people's life also. And this is through the power of education. ठीक है, through the power of education Scorpio can transform people's life, because education is something that is very powerful, powerful in terms of changing lives. So that is why you get Leo in the 10th house. लेकिन लियो 10th हाउस में अकेला ज्ञान के लिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, दान का साइन भी तो आना चाहिए. लाइक साइन ऑफ डोनेशन शुड बी इन द 5th हाउस. You should have a knowledge actually. Sagittarius in the 2nd house. So yeah, Scorpio has this thing in better form कि वो knowledge के through लोगों का जीवन बदलने का शक्ति रखते हैं. And in good terms, देखना, in good terms, if very strong Scorpio people get into colleges, देखना teacher बन जाते हैं. Very strong अगर Scorpio हो, and in terms of good in terms of they will end up doing teaching. Why? Because they have a lot of knowledge. They are ready to give their knowledge, like this 5th house, all education, and their 10th house is revolving around schools. Okay. So yeah, I have met a lot of people who are do schooling and all that, and they have got Scorpio Lagna, very prominent, or maybe Rahu Scorpio over there. Okay. So yeah, into schooling and all that stuff. In little bit corner scenarios, what happens is they are like single mothers protecting their child. Because 5th house is again your child, kids. Leave को स्कॉप दान का भाव चला गया. So yeah, you are trying very hard to like you are giving a lot of things for your child, giving up things for your child, and you are somehow making your child grow. This is something that a Scorpio does. So like KGF movie, so that is something कि वो माँ का story है ना, कि single handedly a माँ is trying to raise the child. So that is coming from Scorpio. Like 5th house, the karma bhav is Leo, doing some things for child and this thing. Let me. There was this. I got this consultation. जिसमें ना I had this Ketu in the 5th, Leo in the 10th house. In consultation, I said कि your liver is small. I said that कि आपका ना liver बड़ा छोटा है. You will be having issues regarding stomach, okay, because your liver is small. And she said, okay, is it still small? Like, hasn't it grown? ये कौन बोलेगा, like ना? Is it still small? Right? No woman would say कि अभी तक छोटा है. I mean कि तुम्हें अभी पता होगा कुछ ऐसा something. Because then she said, because I have donated my liver to my child. Okay. See, the sign of donation is there in the 5th house. 5th house is your original liver. So you're giving up your body part for your kid. Ketu in the Leo. 5th हाउस तो हमने वो देखा था ना, 5th हाउस वो स्टमक. स्टमक के अंदर लिवर होता है 5th house. Stomach, yeah, stomach and liver. Both. Liver is something that is prominently from 5th house. So, लिवर भी 5th हाउस से ही देखते हैं पूर्वा. हाँ, ओके. पेट के 2-3 ऑर्गन, पैंक्रियास भी आई थिंक वहीं से देखेंगे. पैंक्रियास भी वहीं से. आप ये बोल रहे हो कि सिंगल मदर है, एक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि सिंगल क्यों, और दूसरा लिवर का वो देख रहे हो आप डोनेशन, बट अगर डोनेशन का साइन 5th हाउस में है तो व्हाई कांट दे बी पीपल हु गिव अप देयर चिल्ड्रन? कभी होता है ना, लाइक यू गिव अप योर चाइल्ड. गिव अप योर चाइल्ड. और सरोगेट मदर्स का क्या? लाइक समटाइम्स यू नो यू आर अ सरोगेट मदर, यू आर बेयरिंग अ चाइल्ड फॉर समबडी एल्स. राइट. वो वाली इधर ही आनी चाहिए, बिकॉज़ आप अपने बच्चे का ही तो दान दे रहे हो ना. और बच्चे ही पैदा करना उनका प्रोफेशन है, सरोगेसी.
Yeah, that would be something. Again a extreme case, like ना आप वो सारे extreme cases उठा रहे हो जो कि scenarios में. Yeah, it could be a possibility. It could be a possibility of surrogacy, like giving up your child. Because the sun will actually be very key in this thing. ठीक है, इसमें sun का placement बहुत important है. Somebody having sun in the 12th house would actually mean to giving up their son. So there will be a lot more combination for that, like having Jupiter in 12 simultaneously. ठीक है, तब जाके मैं बोलूंगा कि हाँ, that could be a possibility of giving up your thing. There should be other nakshatras also involved for this thing. ठीक है, so yeah, multi-layered things are there. लेकिन जो तुम possibility सोच रहे हो, yes, they are there to it be implemented in this way. So हाँ, हो सकता है, this is a possibility, but there needs to be other thing, like if you want to have this ligma, there should be other combination in this way, is something that comes from kritika. Actually, surrogacy is something that is very prominent in the nakshatras of kritika, and it will happen in the nakshatra of kritika. Why? Because Kartikeya is someone who was born from 7 mothers. Okay, Kartikeya, Lord Kartikeya, Agni के पुत्र थे. शिव जी, it's a whole lot of story regarding how Kartikeya is born. So having a child in that way, like having the child like IVF through, sometimes somebody having Kritika very strong. Okay, so yeah, that is a part. So you need Kritika also here. So yeah, सारी possibility हैं जो आप सोच रहे हो ना, surrogacy और वो सारी चीज, giving up your child, because that happened in the story of Kritika only. And so somebody having moon in Kritika, like na in Aries के like last 28 degrees के around में हो जाए moon, along with all Scorpio thing. Yep, there is a story of giving up the child. यही moon Taurus में हो जाए into कृतिका नक्षत्र, पॉसिबिलिटी कि आप बच्चा छोड़ेंगे नहीं, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी कि यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स टुवर्ड्स द child. So yeah, in both scenarios this is true. This is true. ठीक है, और पूछो कोई सवाल. स्कॉर्पियो के लिए देखो इज्जत बड़ी प्यारी है. स्कॉर्पियो पीपल ना इज्जत नहीं जानी चाहिए कुछ भी हो जाए, और स्कॉर्पियो ही एक ऐसा लगन है जिसमें इज्जत जरूर जाएगी, क्योंकि इट्स अ साइन ऑफ बेइज्जती. देखो जिसका डर होता है ना, वही होती है सबसे पहले ज्यादा चीज. नहीं, और इनके लिए जरूरी भी है ना. Sign of maybe sign of show off is in the 12th house. Leo as a karmic thing. Leo as a karmic thing is there. So yeah, sun strong, very good. like ना आपका बेइज्जती नहीं होगा, आपका उन्नति ही होगा, तो उत्थान ही होगा. Sun's weak, या पॉसिबिलिटी देखना बहुत इश्यू हो जाए, कुछ ना कुछ बेइज्जती हो जाए. Sun is the key. Actually Scorpio में sun should be very powerful. सन बहुत कुछ डिफाइन करता है इसके चार्ट में. ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो इज द साइन ऑफ डेथ एक्चुअली, है ना. मरने के बाद इज्जत मिलती है. कितने भी बुरा से बुरा आदमी हो, सब लोग उसको लिखना इज्जत देने जरूर आते हैं. तो और समथिंग समबडी हु इज लाइक इनटू फाइटिंग. ठीक है, सो या भगत सिंह का एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल. लाइक ना कितना रिस्पेक्ट और अर्निंग वो होता है because of a belief system. He did kill himself as a suicide, and he gained a lot of respect for that. ठीक है, तो मरने के बाद and all that वाला thing. And having a lot of in your core, this 9th house is the Sagittarius part, and that is something having very strong beliefs or things regarding your land.
having very poor beliefs regarding your land. ठीक है, so या देश के लिए कुछ करने का, कर गुजरने का, मरने का, मिटने का जज्बा वाला thing भी comes from moon, regarding this thing of ninth house. So in that case scenario, Jupiter needs to be very strong. Okay, Jupiter strong होते ही what will happen? This ninth house will get strong and simultaneously second house will get strong, and that would totally define how Sagittarius people will, like Scorpio people will be into more of good places of fighting and all that. Scorpio people actually get into power. That is why I say Scorpio is the nakshatra for IS officers getting into power. Like Scorpio is the nakshatra, is the lagna for having very good powerful tendencies. Like they need power. Scorpio को power का बहुत बड़ा भूख है because its whole agenda is to get the Leo. 10th house is the all that day in Scorpio. So yeah, this power gets, देखो schooling बिना एक प्रकार से बहुत powerful position है क्योंकि when you become somebody like a teacher, you get this small your own good kabila type का, and you are their king to teach them and all that. So yeah, and they will work according to you. And simultaneously, जब bigger picture में आते हैं, when you get stronger Jupiter, good Jupiter or maybe strong, powerful Jupiter Sun, powerful Sun, what happens is now you need a very big mass. So you work for a lot of people. Sun का prominence बढ़ना शुरू हो जाता है. So yeah, as soon as Sun getting strong, now you become like now this IS officer, you basically person, because you need that power. So yeah, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्कॉर्पियो के साल में कोई ना कोई कंपटीशन जरूर निकल जाएगा. There are people looking for like ना this competition crack नहीं हो रहा, because अभी तक तुम्हारा एक नंबर फोकस वन है कि फोकस 6th हाउस पे जैसे ही आया, now you have to win it somehow, anyway, by hook crook anything, you want to win that thing. Scorpio. So that is what you get into 6 Aries. जीतना इसलिए इम्पोर्टेंट. अब इसके जीतने के चक्कर में 7th हाउस चल जाता है. अब वो आप किसी हाउस से लेना, किसी से संबंध स्थापित नहीं करता. You tend to take like ना अपने हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, and that is not something where Libra is very good at. Like no, 7th house is for partnership. Like you want somebody to help you in all this thing, but certainly अगर वही वो हो जाए, like ना वही का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ जाए, and you जो instead of getting things you are just giving things, ना relationship में problem. This tends to happen prominently with Mars in 6th house also. The Mars in 6th house also this tendency makes. Yeah, various tendencies. Like in this way you can see like various tendencies. Jupiter 2nd house actually शादी करवा देता है. I have seen that many times. I had this person having Cancer का Jupiter in 2nd house. शादी होते ही 2-3 महीने बाद छोड़ दिया. I don't know what happened, but yeah, you know, because it's a very strong Jupiter over there, very strong Jupiter in the 2nd house would actually damage this 9th house and the 7th house. तो स्कॉर्पियो असेंडेंट वाले एट अ वेरी हाई रिस्क इन जनरल फॉर डिवोर्सेस. Yeah, because these people are not here for marriages thing. ये जीवन में कुछ कर गुजरने आए हैं, ऐसा समझो. अच्छा, तो बट इनका जैसे आपने बोला इज्जत इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारे सोसाइटी में इंडिया में तो मतलब मैरिज इज समथिंग, इज्जत का बात ना नहीं चला पाए तो लोग तो बोलते हैं ना समाज में. ये तो नहीं भी मिलेगी ना, वो भी तो एक थीम है कि इज्जत उनके लिए इम्पोर्टेंट है बट दे डोंट गेट इट. वाला थीम भी तो चल रहा है ना कि इज्जत मिलती नहीं है या मतलब चली जाती है. हाँ, कहीं ना कहीं बेइज्जती होती है. ठीक है. देखो हर सिक्के का दो पहलू हैं. अगर तुम्हें इज्जत पानी है ना तो बेइज्जती से डरना नहीं. एक हमेशा डरना कि इज्जतदार की ही बेइज्जती होती है. जितनी गालियां मोदी खाया है उतना तो मैं तो नहीं लगता किसी व्यक्ति को आज तक इंडिया में किसी ने कुछ बोला होगा.
और जितनी तारीफ मोदी की हुई है आई डोंट थिंक कि उतनी किसी की हुई होगी। तो राइट। एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होंगे और एक को पाने की चेष्टा में हमेशा रखना, दूसरा अपने आप मिलेगा मिलेगा, बिकॉज यू कैन नॉट हैव सिंगल लिटिल थिंग। ठीक है, तो जिसको भी इज्जत प्यारी है उसको बेइज्जती फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही जब ज्यादा फील होना शुरू होगा तभी तो इज्जत के लिए अच्छे काम करेगा। तो दिस वे इट गोज हैंड इन हैंड। दिस इज द ड्युअलिटी ऑफ लाइफ, दिस इज ड्युअलिटी ऑफ लाइफ, एक है तो दूसरा भी होगा। सो या, तो या स्कॉर्पियो पीपल लाइक ना आर वेरी इन टर्म्स ऑफ कुछ कर गुजरने वाले टाइप से लोग हैं। दीज आर पीपल हु आर नॉट गोना टेक लाइक ना शादीशुदा वैवाहिक जीवन में इनका रुचि रुझान नहीं है। दैट इज लिब्रा 12th हाउस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं, दे आर हियर टू लाइक ना गेट द वर्क डन। दिस कुड बी वेरी गुड थिंग्स, some interesting very bad things, good things अगर ये आपकी like दशा वशा आ जाए, you are focused on something, you want to achieve something, like somebody who is a yogi, very good in terms of a yogic thing, having Scorpio in their head, this high energy of Scorpio over their head. So yeah, they could achieve whatever they want. Like this is a sign of achieving something. Very focused, very achieving something, and all that. बट इन टर्म्स ऑफ अदर एस्पेक्ट्स अगर सामान्य जीवन के विचारधाराओं से सोचे, नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। दैट इज व्हाई इट्स अ ससुराल, स्कॉर्पियो इज ससुराल, having malefics in Scorpio will have a lot, that person will have a lot of issues with the ससुराल पक्ष। ठीक है, ससुराल पक्ष से इशू होना बहुत सारे, लेकिन इन जनरल या in general 8th house में planet जाना will have lead to a lot of issues in sasural. So yeah, I have this lady's chart which I आप चार्ट remember, चार्ट पे समझाओ। chart ही तो है, समझा? नहीं मतलब ऑथेंटिक चार्ट। मैंने ना आज रामायण वाला सब्सक्रिप्शन ले लिया और मैंने 2 एपिसोड देख लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। But vast Chupatam, yep, and yep, yep. So yeah, this is one of charts that I have. Like look, like try to look in terms of marriage perspective and all, because 7 नंबर लगा है तुम्हें बस मैरिज देखनी है। अरे तो इसका तो वैसे भी 7th लॉर्ड इन 6th हाउस चला गया है, तो ये साथ में तो ऐसे भी नहीं रह सकते हैं। और वो पाप करतारी योग भी हो गया ना, मतलब 7th हाउस दोनों तरफ से मेलेफिक में है, फंसा हुआ है। मतलब इधर मार्स है, उधर सन और केतु है। और 1 2 3 4 5, अच्छा 6th हाउस बहुत प्रोमिनेंट है इसका, क्योंकि 3 प्लैनेट वहां है, सैटर्न भी वहां देख रहा है, राहु भी वहीं देख रहा है। तो लाइफ में बहुत या तो लंबा कोर्ट केस है या फिर बीमारियां हैं। Look other things also. 8th house बढ़ा रहा हूँ, 8th house तो देखो। 8th हाउस में सन केतु है। अच्छा, तो गेन का साइन ही उधर चला गया है। Try to read everything. देखना again, तुम लोग का सबसे बड़ा mistake, jumping to other planets without trying to imagine this person, without अच्छा trying to see the lagna, without trying to like ना try to find his body in your head. बस कूद जाओ कहीं पे भी जहाँ पे ज्यादा प्लान देंगे और मेरे को अच्छा, तो ये लड़का है लड़की है ये बता दो। ये नहीं बताएंगे।
अच्छा चलो जो भी है, अगर तो लड़का है तो क्योंकि सेकंड हाउस में राहु है तो दाढ़ी मूंछ रखता होएगा, और लड़की भी होगी तो भी वो ना बड़ी शैबी सी रहती होएगी। आगे मतलब शैबी मतलब अपने फेस की कोई ज्यादा टेक केयर नहीं करना। हाँ वैसे तो वीनस मून के साइन में गया, सुंदर भी होना चाहिए। ठीक। अपूर्वा जी एनी कमेंट्स? मतलब सुंदर पता नहीं, मैं कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रही, बट रिफाइंड होना चाहिए इस इंसान को थोड़ा, अपने मतलब इसकी पर्सनालिटी वैसे थोड़ी रिफाइंड होनी चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिफाइंड? मतलब कैसे? फॉर्च्यून, फॉर्च्यून प्लस। नहीं 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 मतलब कि जो भी चीजें वो सिलेक्ट करेगी या हाँ, करेगा, वो बड़े मतलब उसका अपना सेट क्राइटेरिया है। सोफिस्टिकेटेड लोग जो होते हैं कि हम्म। अपने उसको बहुत, वो तो मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि शाबी होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी रिफाइंड होना चाहिए इस इंसान को। जैसे सोफिस्टिकेटेड होते हैं ना, एकदम प्रिम एंड प्रॉपर रहना। बट इसके मतलब बिकॉज स्कॉर्पियो और राहु सेकंड हाउस में है, तो कुछ तो सडन इवेंट्स होने चाहिए फैमिली में। वेल्थ से रिलेटेड भी, हाँ सडन मनी भी आएगा इसको। सडन मनी, बट व्हेन वो मैं देख रही हूँ। अब वो तो दशा में देखना पड़ेगा, ऐसे कैसे पता हाँ लगेगा। जाओ जाओ और सेकंड हाउस में ही जाओ, देखो और कैसे। वो एट्थ पढ़ा रहे हैं। नहीं इन द हाँ सेंस, हाँ स्कॉर्पियो या एट सेकंड एट में ही रहो, मतलब यही है हाँ कि फंडा है कि वही। हाँ, मैं पहले स्कॉर्पियो राशि देख रही थी, फिर सेकंड हाउस मतलब एट्थ हाउस भी देखेंगे फिर, बट क्योंकि ऑलरेडी वहां पर एक सडन वो है एनर्जी, और फिर राहु और भी ज्यादा उसे इंक्रीज करेगा ना, राहु इज सडन इवेंट्स। Yeah. Now tell me something about our face. हर फेस लड़की है। हाँ लड़की है, ठीक है। मतलब इसे या तो कोई वो होना चाहिए एक्सीडेंट या कुछ, उसकी वजह से कुछ फेस पे होना चाहिए, सडन जो चोट होती है वो। या 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 इसका नाक टूटा, ठीक है। नाक टूटा इसका दो तीन बार सडनली, ठीक है, एक्सीडेंट। स्कॉर्पियो का एक मार्स लॉर्ड जाकर के 6,000 बैठा हुआ है, दूसरा लॉर्ड जाकर के 8,000 बैठा हुआ है, ठीक है। सो या समथिंग हैपनिंग टू फेस आल्सो बिकॉज़ स्कॉर्पियो second house Taurus having Ketu, Taurus में Ketu है, so yeah, something happening to face. Yeah, in this case she had like na bone surgery, like no surgery, twice thrice, दो तीन बार इसका नाक टूट चुका है, ठीक है। Having Mars in there, sudden events, having injuries, issues like that. Okay, yeah, voice, in terms of voice, Scorpio Mars Rahu energy बहुत ऐसा लगता है 2 इंच दूर से फोन से बात कर लो तब भी सुनाई देता है। मतलब ऐसे हाँ हाँ, इस ठीक है। इसकी हस्की वॉइस है क्या? सर बोलते हस्की हैं राहु होने से हस्की वॉइस हो जाती है। हस्की क्या होता है? जैसे करिश्मा कपूर की नहीं है, जैसे गला बैठा हुआ है थोड़ा सा। रानी मुखर्जी की आवाज है, बट वो हाँ नहीं हाँ हाँ। होगी, इसकी आवाज कोर्स होगी। एक देयर इज अ डिफरेंस, हस्की स्टिल एक टोन में फिट होती है ना, हम्म। टोन में फिट या नहीं। इट्स अ वेरी वेरी लाइक ना सर, क्योंकि फीमेल है, पिक्यूलियर वॉइस लाइक ना बहुत पतली हो जाना, अजीब प्रकार से, और उसमें थोड़ा सा हैवीनेस ऑफ होना, ठीक है, जुपिटर का हैवीनेस हो जाना, ठीक है। या हम्म। दैट इट फील फंडामेंटली इट फील्स लाइक कि शी इज फाइटिंग, ठीक है। मार्स राहु सेकंड हाउस, ऐसा लग रहा है बोलते भी है ना, क्या हो गया, बाप रे। हाँ रखा तो है, ऐसा, ठीक है, अच्छा। टेंडेंसी ओके। नॉर्मल वॉइस। हाँ, ये कोर्स वॉइस होता है ना, इसमें टोन सही नहीं होता। आप एक हाँ टोन सही नहीं होती। टोन चेंज होता है ऐसे, और वो अच्छा। लगता है कि Rahu in second हम्म। house, a lot of talkative people, like na very talkative people. हाँ, Second house Rahu. Yeah.
Yeah, that is something. Then Ketu in the this thing. So yeah, what is happening is ki these are people are giving up the responsibility from the eighth house. एक ससुराल का कोई responsibility नहीं लेना चाहते. हम्म And why is happening? Because Scorpio में राहु है. राहु and Scorpio goes कि आपका परिवार और आपका ससुराल का पक्ष में 180 डिग्री का अंतर हो जाएगा. Your family tradition and all those things will be very different from your in-laws family and tradition thing. So a lot of differences there and a lot of traumatic events. Like na, a lot of traumatic events that happened in the sasural. Okay, this thing of having a lot of issues in this family because of like the family members. Okay, Sun Ketu combination, and that is why giving up the sasural, having this thing of कि मेरे को ससुराल में रहना ही नहीं. ठीक है. So yeah, it could. अब तुम बोलोगे Taurus है तो family क्यों नहीं बोले? Because Libra is something that is rising. It's more of regarding something that kicks off after marriage. So yeah, more I will be inclined towards the sasural and all those things. Having very traumatic event like ना खाना नहीं देना, ठीक है, ससुराल पक्ष वाले खाना नहीं दे रहे हैं. All those scenarios start coming up, playing up when the Rahu in the this accident has moon in a conjunction. Okay, in the this thing seventh lord in Pisces sixth house placement. ठीक है, लेकिन Jupiter moon का conjunction है वहीं पे. This scenario makes up. देखो केस क्या हुआ कि अपना रिलेशनशिप अपना पति को छोड़ करके this lady took his child and went away. To live alone on his father's. So father is somebody who was very helpful, like ना बहुत मदद करने के रूप में उनके बच्चे को किया. So yeah, Venus actually did die in this case. Like ना once there was no relationship with it for like at least 3-4 years. But then again things transformed, चीजें happened, and yeah, they got back together again. Separated from the in-laws, like ना एक ही फ्लोर में रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर में in-laws रहते हैं, in-laws से कोई खाने लेने का मतलब नहीं है. And not also like ना this Ketu in Taurus not even interested in taking responsibilities. Moon, Jupiter, Mars, Moon in Pisces more of interested in towards like na Moon, Jupiter towards having the knowledge, gaining like na good knowledge and all that. उसमें interest ना, isolation में रहना, all that thing. Mars is actually not powerful in. So yeah, health issues हैं, but इतने severe नहीं हो पा रहे. कुछ ना कुछ लगा रहता है, that is for sure. But क्योंकि Pisces का sign है, 6th house में जाते हुए भी Mars तोड़वा नहीं पाया relationship because एक तो Pisces का sign ऊपर से Moon भी वहीं बैठ गया. Again producing a lot of water. Jupiter भी बैठ गया और water ही water कर दिया. So yeah, that energy of 6th house Mars. So yeah, in terms of this thing, I asked her like now she told everything कि she was the like most courageous girl in his batch. यही थी जिसने बहुत सारी लड़कियों को like ना अपने scouts पे ले जाना, ahead like ना whistle blower. She said कि मैं अपने सामने गलत होता हुआ नहीं देख सकती थी, मैं लड़ जाती थी, मैं भिड़ जाती थी, सबसे साथ ये चीजें करते रहना. All that story she confirmed. ठीक है. Currently she is working for blind school actually. ठीक है, बच्चियों के लिए काम करते हैं ये. Saturn in Gemini, ठीक है, into 9th house. Saturn 9th house Gemini work for us like into a management which handles girls, blind girls actually. So yeah, Sun Ketu, thing, uh, this thing of Sun Ketu got implemented in this way of a karmic thing, and she is working for this school thing for blind girls, Saturn Gemini also. Yeah, so she also got involved into makeup things, or tried to like learn makeup things and all that. So yeah, Sun was involved here, this house, and yeah, Rahu Ketu. So yeah, makeup भी like ना ये वो भूत तो वाले करते थे, interested towards that direction only. Mars
again, like, no, the way I'm studying is this only. जैसे मैं तुमको समझाया. So when I see this thing and this thing, all the story and having this strong Rahu in this second house, I know this is a story of a Scorpio more than Libra. But yeah, other combinations depicting the same things and this thing. Yeah, then I asked a lot, like मैं बहुत नहीं, वो तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ because I have talked to her a lot. So yeah. So this is something that I wanted to show in terms of all these factors. So yeah, Mars 6th house, be ready for like this responsibility of doing the things for spouse. Yeah, spouse in terms of this in all this scenario was more towards siblings and all like that. Spouse was the वो नहीं था, spouse से झगड़ा नहीं करता था. It was all because of the sasural paksh morally that made this issues. Husband was more inclined Mars because seventh lord is something like Pisces, Jupiter, Moon kind of thing. So yeah, Jupiter Moon person, not very interested in fighting in all. So yeah, but this thing of having a lot of trauma, मतलब in the sense कि suicide करने का भी इन्होंने try किया, ठीक है, poison खा लिया and all that issues. So yeah, having Lagna into this moon thing, person can try to kill himself also because Lagna is right now your body and it's going into the moon sign. You try to kill your own self. लेकिन इससे तो ये 9th हाउस में गया ना मून अपने साइन से. Okay. Yep. तो 9th हाउस में जाके क्यों किलिंग के बारे में सोच रहा है? किसकी killing के बारे में सोच रहा है? खुद की सुसाइड. That's because Lagna Lord is into this. कैंसर में 10th हाउस. 10th house. नहीं. वीनस कैंसर में. कैंसर में one dies one after one time. आवाज चलेगी. क्या बोला? मैं कह रहा हूँ कैंसर is the sign of like ना once you die and just rise again. अच्छा, ओके, एक बार मरना पड़ता है. हाँ, ठीक है. लग्न लॉर्ड अगर जा रहा है, that is something your body you try to kill yourself into something and then come back. ओके, ठीक है. ठीक है. अच्छा, जब बहुत सारे हाउस में होते हैं तो हम प्रोमिनेंस कैसे देते हैं? इन दिस केस मार्स 6th हाउस में है तो हम इसे एक्चुअली स्कॉर्पियो की तरह देखना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पे जुपिटर और मून भी है, तो हाउ डू यू नो कि कैसे कितना प्रोमिनेंस देना है मार्स को यहाँ पर? How do I know? मतलब डू यू चेक? I have already told you about this thing. नहीं, चार्ट जनरली जैसे मैंने एक चार्ट देखा जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स कॉन्सेंट्रेटेड है 1 या 2 घरों में, तो फिर कुछ ज्यादा समझ नहीं आता उससे मुझे. तुम हर एक प्लैनेट सिंगल हैंडल करो ना. दिक्कत क्या है, क्यों समझ नहीं आता? तुम अगर एक प्लैनेट का स्टडी करने चलो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा. तुम्हें अगर मून स्टडी करना है तो तुम्हें पता है कि जुपिटर का एक तो पाइसियन है पहली बार. मून पाइसियन के सारे रिजल्ट्स लिख लो. loves isolation, loves like ना far off islands and all that. 6th house, ठीक है, very like ना अपना सारा दुखड़ा सुनाने वाला, healing all this में interested होने वाला, ठीक है. ये 6th house से और Pisces से रिजल्ट्स आ गए तुम्हारे. जुपिटर से कंजंक्ट करा लो, very like ना into spirituality, loves like the guru and all those people, try to be. But Mars is also there. So yeah, Jupiter Mars is there, or Mars comes like the aggressive person also at the same time like interested into changing things and transforming. Yeah, then Mars का देखो, Mars 6th house का रिजल्ट देखो, Mars के संबंध में समझो, Jupiter का 6th house का संबंध में समझो. In this way you decode everything about this planet, each and every planet, and you will get to know the results. तुमको बहुत सारे प्लैनेट्स को इकट्ठे पढ़ने की क्या जरूरत है? तुम एक एक प्लैनेट से स्टडी करो ना. देखो पहले एरीज, तुम साइन पे जाओ ना. पहले एरीज 7th हाउस में है, एरीज से 12th हाउस में जा रहा है मार्स. अब यहाँ से समझो कि मार्स का क्या पोजीशन है इसके लिए, कि मार्स का जो भी ताकत रहेगा वो इसको और इसको डिफाइन करेगा. मून का जो भी ताकत रहेगा वो इसको डिफाइन करेगा, ठीक है.
उसी तरह से जुपिटर का जो भी ताकत रहेगा वो थर्ड हाउस और तुम्हारा पाइसन को डिफाइन करने वाला है. Various ways में you will get to know. So this I met this native into an ashram only. I met her in, like, she is very involved into gurus and all that, and I met her over there. And yeah, she has spent a lot of time into ashram and all that, away from like this thing. Also like mother, guru mother and all that things, into some guru bhakti and all that. So yeah, this thing is prominently there. Martian things got have cooled down because Martian things का एज फैक्टर से बहुत ज्यादा टेंडेंसीज है, ठीक है. आफ्टर सर्टेन एज लाइक 28 के बाद थिंग्स स्टार्ट कूलिंग डाउन विद मास. सो मार्शियन चीजें थोड़ी कम होने लगती है, लेकिन 28 तक वेरी स्ट्रांग. ठीक है. सो या वेरियस चार्ट जिसमें ना सारे ऑपोजिंग प्लैनेट्स एक ही हाउस में है, और मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी. लाइक यू हैव सन. कभी भी कंफ्यूजन हो ना, स्टार्ट प्रेडिक्टिंग. एक ही तरीका है हर कंफ्यूजन को दूर करने का. जिस हाउस में बहुत सारे प्लैनेट है ना, आस्क अबाउट दैट नेटिव, दैट एरिया ऑफ नेटिव एंड देयर एस्पेक्ट. यू विल गेट टू नो होल स्टोरी इन 1 सेकंड. 7th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट है, पूछो हस्बैंड से रिलेशनशिप कैसा है, पता चल जाएगा तुम्हारा क्या हाल है उसका. 9th हाउस, 4th हाउस है, मदर से पूछो कैसा क्या हाल चाल है, मदर का क्या लाइफस्टाइल रहा, राज स्टोरी रहा, पता चल जाएगा तुम्हें एक बार में. हर देयर इज ओनली वे टू नो multiple planets results is to prediction, and you are good at it. तुम्हें आ चुका है, मैं बता रहा हूँ. अगर तुम स्कॉर्पियो में एंट्री मार चुके हो, you have already known like 50%, more than 50% you have known. अब prediction आ जाना चाहिए. So yeah, you know already the houses. बहुत सारे houses में जाने पे बहुत सारे issues तुम्हें पता है कि क्या क्या होने लग जाएंगे. So yeah, so this case scenario is very good case of Scorpio things. So see, very when Scorpio starts getting strong, why this lady works in school, Mars in, देखो तुम प्रोफेशन हम लोग जनरली 4th हाउस से 10th हाउस से देखने की कोशिश करते हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि whenever very strong planets start afflicting, start affecting, it will change the whole chart. लेकिन इसका चार्ट ऐसा स्कॉर्पियो की तरह ही बिहेव करने लग गया है. तभी ये स्कूल में काम कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रही है, बच्चों के लिए काम कर रही है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ ब्लाइंड स्कूल, बिकॉज लियो हैज दिस सन केतु कंजंक्शन. कौन से स्कूल में काम करती है? ब्लाइंड स्कूल में काम करती है. तो या दिस थिंग मींस, ऐसे भी कहा था कि जहाँ पे राहु होता है आफ्टर अ पॉइंट यू सी चार्ट वैसा बिहेव करता है, करना शुरू कर देता है. राइट, करेक्ट, एज लगन. yep, that is something that I have decoded through life patterns only. So yeah, sometimes after, और ये बहुत अभी रिसेंट की बात है, मतलब इतना स्कॉर्पियो राहु का रिजल्ट स्कूल वाला पार्ट है. because now what will happen is कि after this thing ना, the Scorpio will get शांत. And what happened as soon as she joined the school, started working in there, she got back to this in-laws family and started living together with them. Not a very good relationship, but still having this thing. Yeah, and she did it for her kids actually, because इनके बच्चे को actually विदेश जाना था, and she needed money for his education, and that is why she compromised somehow. But it all works. She come down to this thing of characters. Yeah, so this was a very good example of this thing. Let's okay, should we end this? Are you guys done with, or we can go to some things like na by chakras and all that. We can go towards that side also. like na जो मैं हर थर्ड लेक्चर में लेता हूँ उनको कुछ ना कुछ वैसी बातें बताने के लिए. चलो अब जितना बताएंगे तो बताएंगे. See, there are 12 Jyotirlings in the India country, and every Jyotirling is related to one sign. And if you want कि तुम्हें पता है तुम्हारा कोई साइन एकदम बर्बाद है, you can just go visit this place and you will get this blessing from there, and you will get this option of like sorting things from that sign. Scorpio के लिए अगर तुम्हें कोई ज्योतिर्लिंग जाना पड़ेगा, let's
कोई है आपके दिमाग में कोई ज्योतिर्लिंग जिसमें I have list. हाँ लिस्ट काय की लिस्ट है इसी की हाँ कौन सा कहाँ पे है ज्योतिर्लिंग, हाँ 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 थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। सो या मैं बोल देता हूँ मतलब तुम पढ़ लो अपना. So Sagittarius is something that is related very strongly with Vishwanath. हाँ Vishwanath. And yesterday only I told this nakshatra comes as Vishwadeva into the sign of Sagittarius. So yeah, names are very closely related to Jyotirlings. People don't understand because, but the same energy having this concept of 12 Jyotirlings is all related to things, all these 12 rashis. So yeah, when you go to Somnath as a Jyotirling, you are going to get results of good 4,000. That is Cancer. Somnath. But why can why it's not linked to planets? Matlab where moon is placed, you will not get good as Not moon. It's a sign thing. Acha. It's all 12 Jyotirlings are related to sign. Okay. ठीक है क्योंकि प्रॉब्लम साइन में ही होगी. ठीक है अल्टीमेटली मून के खराब होते ही तुम्हारा कैंसर डूबेगा. ठीक है मून डेबिलिटेटेड होगा तो कैंसर सबसे पहले पिटता है रादर देन मून. ठीक है तो यहाँ सोमनाथ जाओगे तो तुम्हारा लाइक ना कैंसर का कोई इश्यू है अगर. ठीक है लाइक इश्यूज विद मदर और मे बी समथिंग रिगार्डिंग इमोशनल लेवल पे तुम्हारी चीजें सॉर्टेड नहीं रहती हैं. इश्यूज है वहाँ. Your this thing will get sorted. You will get actually at least get the ways to get sorted. काशी विश्वनाथ जाओगे you will have Sagittarius getting sorted. like ना लगन में Sagittarius है तो लगन से related कोई भी issue रहा होगा तो चला जाएगा. wherever Sagittarius is prominently. ठीक है त्रयंबकेश्वर जाओगे तो ठीक है तुम्हारा this Gemini related things. त्रयंबकेश्वर it's a 3 thing that is denoted by Trambakeshwar. It's similar way when you come to Mahakal or Jain, you will get sorted with the Scorpio things. Okay, because Scorpio is the death. अगर जेमिनाई प्राण वायु है तो स्कॉर्पियो में प्राण वायु खत्म हो जाने का स्थान. And that is why you get Gemini in it. It's a finishing of it. And that is something that is a domain of Mahakal, महाकालेश्वर जैसे कह सकते हैं. ठीक है तो स्कॉर्पियो का बहुत सारा प्रॉब्लम देखना. इफ यू हैव नेगेटिव प्लैनेट्स इन स्कॉर्पियो और मे बी स्कॉर्पियो नॉट परफॉर्मिंग गुड लाइक स्कॉर्पियो 6th हाउस में या 8th हाउस में या 12th हाउस में एंड यू सी कि यार ये प्रॉब्लम में स्टक हो गया है या यू नीड टू गो टू महाकालेश्वर and dramatic things will start happening when you go to right places. When like ना right places पे जाते ही तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. like Vaidyanath, like this place of Vaidyanath. ठीक है Vaidyanath is something very strongly related to Aries I think. Or maybe this problem of Virgo getting solved because Vaid is something that is related to remedies like Virgo. So Aries, anything regarding Aries will get sorted if you go to Vaidyanath temple and all that because getting cure or illnesses से दूर जाएंगे. So yeah, I don't know whether to say to Aries or it will really रोग तुम्हारे सही होंगे. That is why it's a energy of Vaidyanath. So yeah, our Rishi Munis knew कि देखो ये लोग सब बेवकूफ आदमी लोग हैं आगे चल के और बेवकूफाना हरकतें करेंगे. It's better to build these temples and let them have this name, good names attached कि बुद्धि जब भी जागे तो इधर अगर पहुंच गया तो वो प्रॉब्लम सॉर्टेड रहेगा तुम्हारा. ठीक है so yeah so Scorpio things can get sorted from Mahakaleshwar and there will be specific events linked to it whenever you will go at those places. I believed in Ujjain. I used to travel for every year. I used to go Ujjain.
मुझे तो बहुत ही मजा आता था क्योंकि आई हैव फिफ्थ स्कॉर्पियो, a lot of food memories with the jam. I was the first, जब मैं first time उज्जैन गया, I didn't knew, but हम लाइक ना उस नाव के दर्शन किए, लाइक जिसका जो साल में एक बार खुलता था, एंड वी हैड नो क्लू कि अगर वो साल में एक बार खुलता तो हम तो नहीं जाते उस टाइम में कि वो लाइन इतनी बड़ी थी. वी स्टिल डिड लाइक ना गेट दिस स्लेप ऑफ लाइक ना एक्स्ट्रा वीआईपी थिंग और समथिंग, बट स्टिल वो बहुत घंटों पर लाइन में खड़े रहे. Ended up reaching at the top of Jain temple, and there was this Chandrakeshwar Mahadev, जो कि नाग का एक रूप है, and in that we get to see only on Nag Panchami day we get to that door is open. और मेरे को याद है कि उस टाइम पे यार उस टाइम पे क्या हुआ? Yeah. So Ketu was on my love activation year, Lagna, at that time. Activation year or active Ketu was transiting over that thing. And yeah, and that same then उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाकर के ओरिजिनल महाकाल के दर्शन, हमें तो महाकाल के ही दर्शन करे थे, बट हम लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से ऊपर दर्शन करे, और ऊपर दर्शन करने के बाद कि हमें ये हो गया, बस ये दर्शन करना था हमें, ये तो महाकाल कहाँ है, ना व्हाट वी हैव सीन एज एन पिक्चर एंड ऑल, जैसे कि वो तो नीचे से रास्ता है, पीछे से आप जा सकते हो, उसके लिए तो कोई लाइन भी नहीं है, है फालतू में तो लाइन खड़े रहे, हमें क्या मालूम था, बट इट्स लाइक समटाइम्स यू हैव टू जस्ट सी Rahu and Ketu, and you just get to see them no matter what you think. So yeah, then we met Mahakal, and after that every like 4 years my beating it up, I used to visit every year, make sure कि मैं जा सकूँ. Yeah, it's a very wonderful place. So yeah, वो duration था जब मैं actually astrology में बहुत deep में चीजें पढ़ता था. I think that is something very strongly related because my Scorpio is in fifth house, is getting education regarding this. Yeah, I have very plans on after some time. So yeah, one aspect is this Scorpio thing. The other aspect of Scorpio is in body you have this Ardha Siddhasana, that is which we have discussed already. And one thing more related to inheritance and all, okay, inheritance regarding में बहुत सारी चीजें. So wherever 8th lord is going to sit, 8th lord तुम्हारा जहाँ बैठेगा ना, तुम्हें वहाँ पे inheritance related चीजें मिलेंगी. You will get it for free. बस मेरा 10th हाउस में प्रोफेशन में क्या इनहेरिटेंस होती है? Yep, you will get to work something that like ना जो कि किसी और का काम होगा, ठीक ना, किसी का अधूरा काम को पूरा करने का तुम्हारा टेंडेंसी बनता है. किसी और का जो काम चल रहा होगा वो छोड़ के चला जाएगा, then you will pick it up. That is कोई what अपना बिजनेस स्टैब्लिश करके तो मुझे नहीं दे देगा कि तुम चलाओ. हो सकता है. This is a possibility. Yeah, this is a possibility. मतलब 8th लॉर्ड जहाँ बैठा है एज इन कहाँ बैठा है आपका? वही तो मैं पूछ रही हूँ, देखते कैसे मार्स कहाँ बैठा है? 8th हाउस में कौन सा लॉर्ड है? मार्स है ना. 8th हाउस में एरीज है, हाँ वो 7th में बैठा. वो 7th में बैठा हुआ है. पार्टनरशिप. हाँ. Now this is something 8th lord in the 7th house. This means कि your partner will actually gain a lot of inheritance. उनको बहुत सारा इनहेरिटेंस में जमीन जायदाद मिलेगा. That is something one. ये भी पाइसेन के साइन में भी है, फिर क्या चीज? पाइसेन के साइन में भी है वो तो वहां पे आपका दान है, आप से मिला हुआ सारा इनहेरिटेंस आप दान में दे दीजिए. ये that is one thing also there. नहीं समझे? आपके मम्मी पापा से आपको जो मिलेगा आप अपने हस्बैंड को दान दे दोगे. लो पकड़ो तो. रहने दो, ये तो नहीं होने वाला. या पार्टी पैसे की हो रही है, वो भी ऐसे कर दे. नहीं बट मैं इनहेरिटेंस एक्चुअली इतना वो करती नहीं बिलीव.
मेरे को तो अपने आप पैसे कमाने हैं ना। क्यों नहीं, ये तो इनको तो करना चाहिए उत्कर्ष, इनका तो 8th में ही एरीज है, तो फोकस ही हाँ, इनहेरिटेंस में होना चाहिए। देखो मार्स बड़ा की रोल प्ले करेगा ना, मार्स पैसे में है ना, लेने देना नहीं उससे। अभी यही मार्स के नहीं, इफेक्ट वहां में होता है पाइसेस ना। में भी है उत्कर्ष, तो वो चीज पहले आएगी आपके पास, तभी तो आप दान करोगे। हाँ तो आएगी, तो मैं तो वो तो बोल रहा हूँ, हम्म। तो आएगी। हाँ, तो इनहेरिटेंस तो इनके पास आएगा फॉर श्योर। इनहेरिटेंस पेरेंट्स से क्यों आएगी? फिर इनहेरिटेंस इन लॉज से आनी चाहिए ना। 8th हाउस में अगर एरीज है तो मतलब पेरेंट्स की इनहेरिटेंस क्यों देखेंगे यहाँ से? नहीं, ये पेरेंट्स की उत्कर्ष बताएगा। इनहेरिटेंस क्यों देखेंगे, ये तो मतलब सी इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी आपका नहीं है वो आपको मिलता है। ये चलते फिरते रास्ते से भी कोई चीज मिलने वाली चीज भी हो सकती है, ठीक है। दैट इज नॉट पर्टिकुलर फ्रॉम पेरेंट्स ओनली। अ फ्रेंड्स मनी कुड बी आल्सो इनहेरिटेड। करेक्ट, बट आप लोगों ने ये क्यों बोला कि वो मैं दान करूंगी? मतलब मेरे को उस हिसाब से तो मुझे पार्टनर की इनहेरिटेंस मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि 8th लॉर्ड जहां बैठा है, 8th लॉर्ड बैठा है 7th हाउस में। सी एट लॉर्ड, पहली बात तो 7,000 बैठा है, एक चीज। दूसरी चीज कि तुम्हारे धन भाव में वो जोड़ेगा कि नहीं, इस बात का भी एक वो होना चाहिए, ठीक है। एट लॉर्ड इनटू सेकंड हाउस, एट लॉर्ड इनटू 11th हाउस, then whatever you get will have this thing of thickness as a money, more prominently money you will get, and you will have this thing. Eighth lord in fourth house, more prominently you will get a house or something like that, ठीक है। एट लॉर्ड इन 7th हाउस, ठीक है। नानी से भी लेकिन नानी ननिहाल पक्ष से मिला हुआ गिफ्ट तोहफा, हाँ, ये ठीक है। अभी रिसेंटली मिला है। मैं पूछने वाली थी, शुड आई बी इन्वेस्टिंग, व्हाट शुड आई बी डूइंग विद इट? ठीक है, दान ही करना है अल्टीमेटली तो। बट मैं वो पूछ रही हूँ कि मेरे उसमें क्योंकि मेरे को जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से तो काफी मतलब इश्यूज है पैसे रिलेटेड। जो हम देख रहे थे लिब्रा में जब हम पढ़ रहे थे, तो आपने एक चीज बताई थी ना कि गेन्स, जैसे स्टॉक मार्केट में गेन्स देखने हैं कि किसको ऐसे कौन ऐसे कर सकता है गेन। तो मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे किसी भी एंगल से वो है। व्हाट डू आई डू विद दिस मनी? दैट इज समथिंग अदर क्वेश्चन। बट मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो कि मैं मदर लेकिन ननिहाल से क्यों बोला, हाँ, टू से फोर, ठीक है, 7th हाउस। So whatever you are going to get in returns from is like the Niyata. So yeah, this way you can just go on and on with every aspect. 5th house, 8th of 5th of connection, you will get inherited knowledge. Like बहुत सारा knowledge जो कि आपको अब देखो ये दो चीजें होती है। inherited knowledge यानी कि something that your father or parents like ना doing or something, or maybe like ना जैसे मेरा Scorpio 5th house, so yeah, I have this tendency of getting my work or project work done by my friends. Like मैं just ask them कि भाई मेरा कर दियो, मेरा भी फाइल लगा दियो अपने साथ में, दो दो बनाइए जहाँ भी बनाइए and get that work done. So yeah, that is also very true. Like I am inheriting his work or something like that. या जब 8th लॉर्ड 6th हाउस में चला जाए, इश्यूज हो जाए उसके साथ, कहीं देयर इज अ प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन, उससे लेकर के लड़ाइयाँ करना पड़ता है, या ओरिजिनली स्कॉर्पियो बिगड़ जाए यानी कि वहां पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्लैनेट्स बैठ जाए, यानी कि एक दूसरे का अपोज करने वाले, लाइक मास मर्करी बैठे हुए हैं, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन इज देयर इज अ फाइट फॉर द इनहेरिटेंस। सन सैटर्न बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो में, अपोजिट पोलैरिटी वाले नेचर्स के लोग बैठे हुए हैं, देन यू विल हैव टू फाइट फॉर द सेम थिंग दैट यू कुड गेट इजीली, नाउ यू विल हैव टू फाइट फॉर। So yeah, this way you can just understand कि what aspect you can get in. But ये याद रखना कि inheritance is not single-handedly one thing. Scorpio is something that is related to dead. तो इसीलिए इसमें मरण करण संस्कार भी आएंगे, ठीक है, एंड उनके साथ मिली हुई रोग भी आएंगे, in the sense कि whatever you gonna inherit is not only the money, it will always be the rogue also. So ननिहाल से अगर पैसे मिल रहे हैं तो रोग भी पीछे पीछे आएंगे, ये याद रखना। मतलब हम वो जो जेनेटिक वो देखते हैं कि you're genetically predisposed to certain illnesses या certain वो conditions, भी इनहेरिटेंस में आ रही हैं। वो भी इनहेरिटेंस में आ रही है। So like somebody having Jupiter Scorpio
got this big home will also get diabetes in free. Okay. So yeah. So like in your case, Apurva, you have Aries in sixth house. Okay. So that is something like now again like some issue regarding legs that was already in your mother's family. ठीक है तुम्हारे माता जी का नाम पाँव का इश्यू या मे बी समथिंग इश्यू विद द पाइसन थिंग और मे बी एरीज थिंग ठीक है पाइसन एरीज थिंग सो पाइसन एरीज थिंग में क्या क्या और आ जाएगा या तो हेड इश्यूज या लेग इश्यूज ठीक है दो कोई बीमारी जो इनके संबंध में हो या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ठीक है कि मार्स इन लिक्विड साइन विल मेक ब्लड प्रेशर इश्यूज और समथिंग लाइक दैट वो इश्यू आना इज अ वेरी इजी थिंग देन कम्स टू यू बिकॉज व्हाट हैपेंस इज देखो जो भी मरण करल संस्कार होते हैं ना दैट इज ओनली कि हम आपके जेनेटिक्स को दूर रखना चाहते हैं अपने जेनेटिक्स के genetics is what is fundamentally the memory of your like grandfather and grandmother or nana ji nani ji but that kriya not happening or that donation not happening in terms of those people what it bring is कि वो अपने आप को अपने पर्सन को नाना जी अपने आप को एज इन द सोल फॉर्म क्योंकि उनका बॉडी नहीं रहा अभी बट ही नोज कि मेरे बॉडी में भी तुम्हारे बॉडी जैसे कंटेंट तो है what will he will try to do is he will start living through your body you won't be able to like he won't be able to live perfectly through your body because he's not that strong कि आपके सोल को किक आउट कर दे because your energy system is so tightly bound नहीं उनको बंद करके रखा गया है इसी तरीके से कि ताकि कोई भी लाइक ना ऐसा रोडवे ना बन जाए आपका शरीर की आत्माएं आ रही है और जा रही है so yeah this closeness comes from Scorpio only like this lock is there this इसी को बोलते हैं एक्चुअली में this कुंडलिनी शक्ति को लॉक करके रखा जाता है so that no other souls can just pass by but that identification of that nanaji's soul with your body becomes sometimes very prominent start becoming that in such a way that after sometimes you will start talking like her behaving like that like तुम देखो ना कि ये जो स्कॉर्पियो वाला थिंग है ना इतना स्ट्रांग है कि people tend to sleep in the same manner देखना जिस तरह से आपके नानी जी नाना जी सोते थे और नाना जी नानी जी बात करते थे आपकी मदर वैसे ही बात कर रही है it becomes so strong slowly you don't even recognize it like आपकी दादी जी ऐसे बैठती थी and suddenly what you see you are sitting like this only and that is where the yoga comes yoga is very thing that wants to detach you from this genetic memory that is inside your body and ये चाहता नहीं कि आप उसी तरह that is why in yoga you have to sit in particular posture do this asana because they want to get you rid out of these memories and these memories can be sometimes good because if your grandfather and fathers have did good karmas then it's okay you will enjoy that thing into you will be helping nature and all that but if they are not that so good things what will happen is you will have that samskara into you and that same sanskara will make you into that kind of person only so yeah those small things like not talking like in the same manner like my mother like ना my नानी मैं आपको केस सुनाता हूँ अपने घर का मेरी नानी has a very peculiar way of talking when she is sick mother did the same thing when she was into corona this thing and I just could relate it so badly and later on we like did a lot of like fun things with it my nani used to talk like this अरे भैया कौनी कौनी पूजा दिक्कत हो गई महारानी काहे नाराज हो गई है का बताई अरे मतलब that this thing of like ना unnecessary this tone of crying and my mother बहुत बहुत तबीयत खराब हो गई है ऐसा हो गया है the same like ना same I could just see like as a like ना नानी जी is talking the same thing but try to understand like मेरे पिताजी ऐसे सोते हैं ठीक है like whenever he sleeps like this and I have seen myself sleeping like that same way for so long until unless I did my like did sadhana and all this started practicing I noticed that I have not
sleeping in the same way, but my father sleeps in the same way. And sometimes when I'm very stressed or not doing my practices, I tend to sleep in the same way. And that is something which comes from Scorpio, this thing of Mars Ketu. Remember, Ketu is the domain where I told you कि ये वो area है जहाँ पे past से चीजें हैं. And Mars and Ketu means something. Mars ancestry को denote करता है या blood lineage को, and Ketu is something that is coming from your ancestry domain. ठीक है? So any time like your 8th house getting affected, look for if somebody died in your family and he has not got proper rituals. Start looking for people कि जिनका sudden death हो गया and they couldn't get those proper remedies done for them. The best option is to go for Gaya. The best option is to go for Gaya and do this Pitra Paksh things. Scorpio will slowly getting detached. तो inheritance से बीमारियां तो नहीं आएंगी please, क्योंकि पहला जो the first thing that is somebody astrologer says is पितृदोष है घर में, पितृदोष है. This पितृदोष is generated from the Scorpio only, and the first symptom of पितृदोष is getting inheritance में बीमारियां. लेकिन जो बीमारी खानदानी में चली आ रही है वो आपको भी हो गई. This thing. Okay. Can we actually link genetics to astrology? मतलब ये जो आप बोल रहे हो, ये हम ऐसे देख सकते हैं किसी चार्ट से कि फादर्स साइड ऑफ द फैमिली की जेनेटिक प्रॉब्लम्स और मदर्स साइड ऑफ द फैमिली की जेनेटिक प्रॉब्लम्स कितना अफेक्ट कर रही हैं या क्या? मैं बोलूंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा. It's better to you do it yourself. Just go and like now look at the bimarias. Look for the combinations for that same bimari and just see कि children are getting it in the same way or not. तुम एक लीनेज उठाओ, ठीक है? दादाजी का चार्ट जिसको मिल जाए, जिसका पिता का चार्ट मिल जाए और जिसके बच्चे का चार्ट मिल जाए, ये 3 चार्ट मिल जाए सीक्वेंस में. दादाजी का तो बीमारी जब प्रसिद्ध होगा, पिताजी को वो नया नया आ रहा होगा, बच्चे को उस एरिया में लेकिन सेम एरिया में कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी तुम्हें. When you start looking in this way, you will find out. मैं तो बता दूंगा उत्तर इसका, बट जब तक तुम खुद से नहीं निकालोगे तो मजा नहीं आएगा. नहीं, क्योंकि देखो साइंटिफिकली हम बोलते हैं कि बच्चे में दोनों तरफ के जीन्स है, राइट, बोथ साइड्स ऑफ लीनेजेस. लेकिन जब ये सब पूजा पाठ और धर्म और माइथोलॉजी और इसमें घुसते हैं तो फिर देन इट बिकम्स लाइक कि आप शादी के बाद एक लड़की भी अपना वो छोड़ के हस्बैंड का सब कुछ मानने लगती है, बच्चा जो है वो हस्बैंड की फैमिली से सब कुछ मान रहा है. तो अगर आप इससे लिंक कर रहे हो तो फिर सिर्फ हस्बैंड की फैमिली से क्यों नहीं आ रही चीजें? नहीं, मदर से भी आती है, नानी का भी तो देखते हैं ना चार्ट से. देखते हैं, लेकिन ऐसे होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब आप शादी हो जाती है अगर, तो आप अपने घर के मतलब अपने साइड के श्राद्ध और वो नहीं करते. फॉर एग्जांपल जैसे मेरा भाई अगर श्राद्ध कर रहा है तो वो दादा दादी का कर रहा है, बुआ का कर रहा है, ऐसे देख के, लेकिन वो नहीं कर रहा, नाना ठीक है, मामा का बेटा. तो वो वाली चीज मैं पूछ रही हूँ कि वो फिर कैसे, या तो फिर दोनों साइड का होना चाहिए ना, कि दोनों साइड के बच्चे दोनों का. In terms of like now, this is I don't know whether it is how much it is legally correct or not, but my nani's सास, like मेरी मम्मी की दादी ने गया किया है, and she has given all the things that is there as a procedural thing to this. गया में जब जाते हैं ना, तो there is no such thing as boy or girl or your family or this family. It's like for everybody. आप 3 पीढ़ियां गायब कर देते हो अपने पीछे से, ठीक है? And you get rid. And my दादाजी is like ना, she is 96, 97, not a single issue. कोई हेल्थ बीमारी ही नहीं आई. And when I look, like ना look understand कि यार ये कैसे हुआ, then I remember कि this story हम लोग उनको like ना क्या बुलाते थे, गंजा नानी या गंजा टकला नानी, ऐसा कुछ करके उनको हम लोग चढ़ाते थे. Because when we saw her, she was totally bald, and when then later like the understanding developed, तो हमको पता चला कि she went to this Gaya place and got her head shaved and all that thing. And now when I look at in terms of astrology perspective, I got to know that she didn't got any inheritance related issue, because there was no soul that could identify her body with herself. So yeah, तुम्हारे एक ना तुम्हारे easily ये चीज है जो genetically बात है ना. See, first of all,
तुम्हारी नानी को क्या बीमारी थी, लाइक ना कोई बीमारी होगी, कोई इश्यू तुमको याद हो? ऐसे Anything स्टिल अलाइव, ऐसे जनरली उन्हें कोई इशू नहीं है. पैर का कोई इश्यू, शी इज बीन मॉडरेट. ब्लड प्रेशर या समथिंग, बीपी, हार्ट रिलेटेड? अब इतनी ओल्ड एज में जाके हो रहा है. ऑल्सो वो 2 साल मतलब 2019 और 20 दोनों में काफी दिन हॉस्पिटलाइज रही, क्योंकि वो एलिमेंट ऐसे. तो उसके बाद थोड़ा वो डिरेल हो गया, बिकॉज ओल्ड एज में आप नहीं कर पाते इतना. उनको सेप्टिसीमिया हो गया था. क्या हुआ था? सेप्टिसीमिया क्या होता है? इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ज्यादा हो गया. टाइफाइड से स्टार्ट हुआ. फिर वो जो ओल्ड एज में क्या होता है, वो हर्पीज जोस्टर, हाँ जोस्टर. वो एग्रेवेट हो जाता है ओल्ड एज. फ्लेयर अप हो जाता है. हाँ उससे, और वो ट्रीटमेंट जब तक उनका होता टाइमली, और वो मतलब हम जब तक यहाँ से पहुंचे और हॉस्पिटल लेके गए, तो वो सेप्टिसीमिया वगैरह हो गया. टाइफाइड से उससे स्टार्ट हो गए. शी वाज इन द हॉस्पिटल फॉर अबाउट अ मंथ एंड हाफ. तो उसके बाद वीकनेस और वो है, बट शी इज रिकवर्ड अभी. ऐसे मतलब अभी भी हमने बोलते हैं वो अपने आलस की वजह से बैठी रहती है, पर ये है कि हाँ वॉक कर रही है, वो कर रही है. शी इज फाइन अदरवाइज. और व्हाट आई एम सेइंग इज कि बी लाइक ना अवेयर कि ना ऐसा चीज होता है, मतलब इट्स बेस्ट टू टेस्ट फ्यू चार्ट्स, कीप गोइंग लुकिंग, लाइक ना लुक फॉर द डायबिटीज सबसे कॉमन. स्टार्ट लुकिंग फॉर डायबिटीज जिनका सीक्वेंस में मिल जाए, 3 लोगों का चार्ट मिल जाए. जस्ट लुक एट दिस चार्ट, तुमको मिलेगा जुपिटर स्कॉर्पियो में, जुपिटर 8th हाउस में, जुपिटर बार बार तुमको लिंक करता हुआ इनहेरिटेंस से मिलेगा. क्योंकि डायबिटीज है, लाइक नानी की मदर को डायबिटीज था. अब नानी को थोड़ा शुगर का वो है, एवर सिंस शी इज कम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल. बट ग्लूकोमा है उन्हें. वो ग्लूकोमा डिटेक्ट हुआ था उनका. वो भी जेनेटिक होता है. दैट्स वो क्या बोलते हैं उसे, काला मोतिया. तो मतलब आपका प्रॉब्लम है. मेडिकली माय मदर आस्क्ड कि आप साल में 2 बार अपना आई टेस्ट कराओ और वो करो. और अब वो मासी को भी हो गया है. मासी का भी डिटेक्ट हुआ है ग्लूकोमा. So yeah, so this वही है वो प्रॉब्लम जो है ना. So somebody in the family needs to do something like very good in terms of procedural things, जो कि नानी या जो भी तुम्हारे जिनको भी ये बीमारी है उससे पहले वालों के लिए करना पड़ेगा. Then only you could just detach yourself, your body from this thing process. So yeah, जैसे कि मैंने तुमको पहले भी एग्जांपल दिया था, this thing of person having 8th हाउस में कैप्रिकॉर्न का साइन था. ठीक है, नहीं कैप्रिकॉर्न का साइन था नहीं. So I remember as far as Aries, Aquarius, Mars, Rahu, Aquarius, Pisces, Aries. ठीक है. So this person Cancer लग्न as Aries in the 10th house, Pisces in the 9th house, and Scorpio, Aquarius in the this house. 8th house. 8th house. Mars Rahu is in this 8th house. ठीक है, Mars Rahu. ठीक है. Even you can predict things like कि जो उसके डेथ सेरेमनीज में हुआ. मैं बता देता हूँ कि सेरेमनीज में क्यों जा रहा हूँ मैं यहाँ पे. बिकॉज सी दिस इज अ चार्ट ऑफ अ चाइल्ड. ठीक है, बच्चे का चार्ट है. पिता का क्या प्रॉब्लम है, पिता का प्रॉब्लम बताता हूँ. बताया था वो वाला प्रॉब्लम, मार्स राहु सडन इवेंट्स, और वो जो नाई के साथ हुआ था मुंडन. एग्जैक्टली नाई वाला कॉन्सेप्ट. So yeah, Mars in 8th house has to do something with the nine. Makar in some 8th house has to something to do with the fools, and this Venus has to do with something regarding vastra. Okay, vastra and all that. Or it could be noun nine also. Like noun now तो जब जो बाल बनाता है, nine is somebody who is a helping hand. So yeah, these all things like you will have, you can look at just from the 8th house. ठीक है, 8th house. Few days back I got few days नहीं, बहुत पहले की बात है, I got this consultation जिसमें Leo Mars was in 8th house. ठीक है, let me see if I have the chart. Let me see.
Let me see. Let me see. Uh, no. I'll tell you the chart. This was Leo Mars in this thing, 8th house. Okay. With Mercury there. Mars, Mercury, Leo in 8th house. Okay. मैंने उसका कुंडली खोलते ही पूछा कि तुम्हारे यहाँ पे किस लास्ट राइट में विजय हुआ है. Okay, so this was the chart. I think जो इनका था. So yeah, this was the Mars Rao thing. So yeah, when this native was calling me, it's his this second house was activated. Sun is in the this house. ठीक उठ करके second house में. So what happened? कि पिता का चार्ट है, लेकिन बच्चे का चार्ट है, तो पिता के लिए हम कुछ प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं. So whole my focus is over here. Fifth house, sixth house. So this boy, this father took a loan because sixth से second house में जोड़ रहे हैं उसके. Took a loan and gave that loan as a to his friends. 8,000. ठीक है, and that is what has become his trouble. उसका इशू यही हो गया है. नहीं, उत्कर्ष फिर से बोलना. फादर ने लोन लिया सेकंड हाउस से. सेकंड हाउस से कैसे लोन लिया? छठा घर फादर का कहाँ है? सेकंड हाउस है. अच्छा, तो फादर वहां से सेकंड हाउस में आ 1 2 गया. 3 4 5 6. ठीक है. फादर ने, हाँ, बच्चे, ये बच्चे का चार्ट है. ये बच्चे का चार्ट है. If I have to do it, I will have to make this lagna. ठीक है, पैसे को लगन बनाऊंगा. Then I will see Leo in the ठीक है. 6,000. So he took a loan and gave that same money to his friends, Aquarius. And now friends are not paying that. पर फ्रेंड्स एक्वेरियस कैसे बनेंगे? फ्रेंड्स तो ये टॉरस बन जाएंगे ना. टॉरस फ्रेंड्स कैसे बनेंगे? क्योंकि फादर तो ये है ना, पाइसिस है ना. फादर मतलब 9th से 3rd हाउस देख रहे हैं ना. पर वो Aquarius originally तो like ना फ्रेंड ही है ना. Aquarius is something फ्रेंड्स और like ना ग्रुप में काम करने वाले साथ में लोग हैं, नहीं प्रोफेशन से साथ में करने वाले लोग. So because why I'm saying something, because second house में sun का sign है, so he's giving that out money. ठीक है, moon sun that is there and getting linked with the 11th house. ठीक है, पाइसन देता है, दोस्तों को पैसे देता है, because 11th house में Aquarius is there. So yeah, this happened. Then I asked, okay, did somebody in your family, like ना father's family, कोई father figure जैसा आपका died suddenly and like ना without knowing the reasons. ठीक है, तो he said yeah, उनके बड़े ताऊजी या चाचा जी टाइप से थे and he died. ठीक है, why I'm saying that, because sun is involved in the second house and that lord is into 8th house. Somebody from father's family he is this, and son father figure type of person is there. So yeah, that Mars Rahu connection getting here. So yeah, Aries है या तो Scorpio होना चाहिए या Aries होना चाहिए. Scorpio में Jupiter, I won't go this way. I would go probably this way. So yeah, I asked, okay, like then I asked what happened in his like ना उनके last ride में नाई को लेके कोई झगड़ा हुआ था क्या, कोई बवाल हुआ था. Then he told the whole story, जो कि पहले भी आपको मैंने बता चुका. Same thing. ठीक है, then I said नाई वाला वो चीज रिपीट कर लो अपना and you will get things sorted. बोलो. नहीं, मैं जनरली पूछ रही हूँ, जैसे आपने ये बोला कि लोन वाला चीज है, तो अगर फादर लोन लेते हैं तो बच्चे का सेकंड हाउस एक्टिवेट होएगा. लेकिन किसी के भी फादर जनरली लेंगे तो लोन, हाँ, फादर लोन लेंगे तो सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा. बिना सेकंड हाउस एक्टिवेट हुए फादर लोन लेंगे. My father booked the loan for car loan. ठीक है, my second house is Leo. In that same day, like the next day, I took a new course.
तो ये इम्पैक्ट कैसे करेगा, ये कैसे पता चलेगा? जैसे अगर फादर ने लोन लिया तो इसके चार्ट पे क्या असर पड़ा, ये कैसे देखेंगे? किसके? इसके बच्चे लाइफ के? में क्या इवेंट हुआ? हाँ, बच्चे के कि बच्चे तुम्हारे के। के? अब आप किसी के, सपोज मेरे चार्ट में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, फादर ने लोन लिया तो वहां पर लिब्रा है मेरे चार्ट में, तो हाँ फादर फिर? लिया तो मेरा लिब्रा एक्टिवेट हो रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब क्या, मतलब इज इट गुड और बैड, वो कैसे देखते हो? अब ये तो तुम जो ना फर्स्ट क्लास का सवाल फिर तुम पूछ रहे हो कि गुड एंड बैड कैसा है। ये तो बहुत पहले हम लोग फाइनलाइज कर चुके हैं कि ये इसमें क्या डिस्कशन करना है कि कैसे सही है। अब अच्छा, मतलब फादर लोन लेंगे तो लिब्रा एक्टिवेट हो रहा है तो तुम्हें शादी होनी चाहिए, ये इतना डायरेक्ट है नहीं ना ऐसा। लेकिन तुम्हारे शादी में तुम्हारे पिताजी बीमार रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। वो कैसे? देख लो, क्योंकि तुम्हारा लिब्रा, जब तुम्हारी शादी फादर होगी से तुम्हारा 6th हाउस। शादी होगा तुम्हारा तो लिब्रा एक्टिवेट होगा ना। हाँ, और वो फादर उससे 8th में है। ठीक है, अच्छा, तो ये दैट इज अ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन अच्छा, क्या पूछ रही हूँ ना, जैसे इस केस में आपने वो देखा कि फादर ने लोन लिया, या ये आपको पता था, ये आपने पूछा हमसे या आपको नहीं, पता? मैं बताया, मैं मेरे को उसने ये मेरे को सेकंड हाउस के एक्टिवेशन में वो मिला है। स्टोरी हाँ, पता है कि भाई मैं, वो खुद ही बोल रहा है कि मैं लोन लिया और ये चीजें हुई। तो मेरे को तो दूसरा सिनेरियो पता करना है कि ना और गड़बड़ी कहाँ है। अच्छा, नहीं मैं उल्टा पूछ रही थी कि अगर मेरे फादर लोन लेते हैं फिर क्या? देखो इसके केस में बता रहा हूँ, इसके दांत में दर्द हुआ उसी टाइम। ठीक है, इसके दांतों में इश्यूज आए उस टाइम। ठीक है, मैं पूछा कि दांतों में इश्यूज आए बच्चे के, बोलेगा था। हाँ, तो अब आपने इशू से क्यों बोले? कुछ अच्छा भी तो हो सकता है केतु इसका। था ना, केतु था इसलिए। केतु दांत में प्रॉब्लम देगा। और अगर कोई प्लैनेट नहीं है फिर क्या करोगे आप? जो साइन है तो पढ़ाई इसका ब्रेक, एजुकेशन में कुछ ना कुछ होता। तो एजुकेशन मतलब वही कि या तो कोई, जैसे आपने अपना बोला कि मेरा, मैंने नया कोर्स स्टार्ट किया, दैट्स अ ठीक गुड, है। आपने नया कोर्स स्टार्ट किया, हाँ, लेकिन ठीक। एजुकेशन में ब्रेक आ गया या वो हुआ, वो फिर सिर्फ मैलेफिक्स के उस पे ही देख सकते हैं हम। हाँ मतलब अगर कोई चीज, बिल्कुल। लिब्रा में तुम पूछना चाहते हो तो लिब्रा सेकंड हाउस का एक्टिवेशन का रिजल्ट बता दो मेरे को बस। लिब्रा सेकंड हाउस एक्टिवेशन का रिजल्ट बता दो बस, इतना तुम्हें अगर मालूम है तो तुम्हें पता है आंसर, और नहीं मालूम है तो फिर मैं भी नहीं बता सकता। लिब्रा सेकंड हाउस एक्टिवेट होगा तो बता दो रिजल्ट, बस इतना ही। रिफाइंड फूड, मुझे तो सिर्फ यही समझ आ रहा है। अरे महंगे यूटेंसिल्स भी ले सकते हो, खाने वाले, या किसी 5 स्टार होटल में जाके खाना खा लो। और बताओ और सोचो। हम्म, लिब्रा सेकंड हाउस के रिजल्ट अगर तुम्हें मालूम है तो तुम्हें पता है कि क्या इवेंट है, और नहीं मालूम है तो नहीं पता पाओगे। जैसे ही तुम्हारे फादर लोन लेंगे ना, तुम कपड़े खरीदोगे, उसी उसी दिन खरीदोगे कपड़े। देखना, उसी 1-2 दिन के अंदर में यू विल बाय न्यू क्लोथ्स। पर कपड़े खरीदना क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस तो नहीं है, लिब्रा इज कपड़े, आई नो, बट सेकंड हाउस इज आल्सो देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज फूड, इट इज। रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम्हें लिब्रा का मिलेगा। देखना, लिब्रा इन द सेंस कि योर पार्टनर। ठीक है, अभी तुम्हारा पार्टनर है नहीं तो तुम्हारे प्रोफेशन से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप होगी तो उसमें वहां पे नहीं होएगा तो तुम्हारा लिब्रा यानी कि नानी, things happening with nani, something regarding work regarding nani, क्योंकि लिब्रा इज नानी। और पर सेकंड हाउस तो रिसोर्सेज भी है। रिसोर्सेज भी है, सही बात है, तो तुम्हें पैसे का गेन बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, समथिंग मनी रिगार्डिंग थिंग्स जो कि सेकंड हाउस उसमें आ जाए। गेन कैसे हो रहा है? गेन तो एक्वेरियस है, लिब्रा इज नॉट गेन। सेकंड हाउस इज प्रोमिनेंटली मनी। वो नहीं, सेकंड हाउस इज कलेक्टिव वेल्थ, इट इज नॉट गेन्स। मतलब जो आप स्टोर करके रखते हो वो वाली वेल्थ है। इट्स नॉट अर्निंग बट इट्स रिसोर्स, हाँ, हाँ। स्टिल योर रिसोर्स। रिसोर्स, लेकिन इट कुड एनहांस इट, देखना लिब्रा कैन एनहांस सेकंड हाउस। देखो ये चीज ना तुम्हें समझनी है। जब तक मैं जितना भी बताता रहा तुम्हें याद नहीं रहेगा, जब तक तुम खुद से ना इसको फाइंड आउट नहीं करते हो। जाओ देखो, जिस साल में तुम्हारे पिता ने लोन लिया और सारे फैक्टर्स निकालो। देखो उस साल शादी, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप था तो क्या उसमें कुछ हुआ? उस साल कुछ हुआ क्या? क्या हुआ उस साल? अगर तब तक तुम खुद से नहीं निकालोगे ना, देयर इज नो बडी दैट कैन टेल यू आंसर परफेक्टली। इसीलिए तो समझना चाह रही हूँ कि बस हम ऐसे हर हर इवेंट से ऐसे निकाल सकते हैं ना फिर। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
मतलब अगर मतलब एक्शन वाइज कि अगर मदर ने कोई एक्शन लिया तो हम उसका वो देखेंगे। जैसे ही तुम्हारे पापा लोन लेंगे ना, तो योर मदर विल गेन दिस थिंग मनी, बिकॉज मदर 4th हाउस से 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा होगा. हाँ she will gain money and she will also gain like ना some शादी में जाएंगे, ठीक है, going to some marriage ceremonies उसी टाइम ड्यूरेशन के आसपास. all this thing happening in second house. ठीक है, तुम्हारा भाई को प्रॉब्लम होगा, देखना your भाई will be the loser of money. ठीक है, he will buy new sport shoes or shoes in that same time जब तुम्हारे पिताजी लोन ले रहे हैं, बिकॉज जेमिनाई 3rd हाउस से 12th हाउस बनेगा, और he might be losing some relationship. So there is a list of all things that will be happening simultaneously with every body member. इसलिए मैं कहता हूँ होश और आवाज से जिंदगी जियो, you will get to see a lot of. वही तो करना चाह रही हूँ, फिगर आउट करने के लिए कि पंखा कब बदल। अच्छा उत्कर्ष, अगर मान लो हम लोन लें तो हमारे पेरेंट फादर की लाइफ में उनके वर्क प्लेस पे आएगा कुछ, क्योंकि हमारा लोन हमारा 6th हाउस हो गया, जो फादर का 10th हाउस बनेगा. ओके लेट्स सी. देखो मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरे को तो बहुत, मैं घड़ी लोन पे लिया. अच्छा I bought this like na very expensive watch for at least only 10,000 rupees का watch था. I took it on an EMI. ठीक है, Virgo this thing 3rd house got activated. मेरा Virgo 3rd house में, this Virgo 3rd house I had to take this loan for like na 2nd house thing, 3rd house thing sorry. ठीक है, so in this way I got activated my 3rd house Virgo. For sure. उसी दिन पे मेरे को स्किन इश्यूज होने शुरू हो गए, देखना स्किन का रिगार्डिंग में चीजें हुई मेरे, पहला सिम्टम. दूसरा चीज, my father's this भांजा got married very close to that point. ठीक है, फादर्स भांजा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि my father at the 7th house में उनके क्या बनेगा, this thing of Virgo coming up. ठीक है, these thing happening. Then भांजा कैसे बनेगा 3rd हाउस तुम्हारा, क्योंकि वो तो फादर से 7th हो गया, तो वाइफ बनेगी, मम्मी बनेगी आपकी. लेकिन भांजे की शादी भी तो बनेगी, 6 और 7 का रिलेशनशिप. also his cousin ना, नहीं कजन तो ठीक है, सिबलिंग तो मतलब वो कजन ही तो, कजन भी तो आएंगे, नहीं आएंगे नहीं पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रही. चलो ठीक है, वो मामा के बच्चे हुए ना, मामा के बच्चे. दैट इज फॉर श्योर. मैं तुमको एक बात बताऊं, दैट इज फॉर श्योर कि तुम्हारा जब भी वर्गो एक्टिवेट होगा तो तुम्हें उस आइटम के रिगार्डिंग, जिस भी हाउस में वर्गो जा रहा है उसके रिगार्डिंग तुम्हें लोन लेना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज समथिंग देयर. तो अच्छा बट हम हर साल थोड़े ना लोन लेते हैं. तुम ये बताओ, तुमने लास्ट टाइम किसके चीज के लिए लोन लिया है और कब लिया, तुम ये देखो लिया है कि नहीं लिया. हाँ लिया है. कब लिया है? 2017 में लिया, घर खरीदा था उसके लिए लिया. घर खरीदने के लिए तुम्हें कौन सा योग चाहिए, पहले ये सोचो. या तो 6th हाउस इन द 4th हाउस, 6th 4th का रिलेशनशिप, या वर्गो 4th. ठीक है, या 2nd 4th somehow connected with Virgo. 2nd 4th. अच्छा नहीं 2nd 4th क्यों यार, सेकंड कुछ भी मेहनत मत करो और फिर सब कुछ पूछते जाओ बस, है ना, ऐसे. ठीक है ना. अपना चार्ट तो कम से कम करो. क्या नाम है? मीनाक्षी. नाम मेरा मीनाक्षी. मे बी आपने MI से लिख रखा हो. ठीक है, नहीं दिस इज नॉट माय चार्ट. नहीं दिस इज माय चार्ट. हाँ दिस इज माय चार्ट. क्या कर रहे हैं अपने चार्ट. तो यार यही है. 2017 में ना, 2017 तुम्हारा कौन सा ईयर एक्टिवेटेड है? 11th होगा शायद. नहीं ये 10th था. लियो ये वर्गो ही था एक्टिव. बस उसमें मून बैठा हुआ है.
घर के लिए लोन ले लिया मैंने, हाँ। खुश? हाँ। ठीक है, एंड देन यू हैव अदर थिंग इज 1 2 3 सी सिक्स्थ लॉर्ड सैटर्न कमिंग इन सेकंड हाउस। अगर मैं वर्गो लगन बनाता हूँ, सिक्स्थ लॉर्ड सैटर्न कमिंग इन द सेकंड हाउस। ठीक है, सैटर्न वैसे भी मैंने तुमको पहले ही समझाया गिफ्ट है, so it's a very good कारका for loans also, like ना getting that loan thing second house में। तो पैसे लोगे तुम किससे लोगे, that अगर सिक्स्थ हाउस है तो ठीक है बैंक से लोगे, एक्वेरियस है तो बैंक से लोगे, नहीं तो किसी और से लेते, किसी आदमी से ले लेते, किसी व्यक्ति से लेते। ठीक है, so this connection will be playing। अच्छा, और का connection, reason why I'm so confident about this combination is because I have tested a lot in the process, and you guys needs to do the same। बिना लेकिन अभी भी बता दिया ना मैंने, तुम कल को नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने खुद से जब तक वो चीज किया है ना, तब तक वो नहीं आएगी, तुम्हारी नहीं होगी, वो अभी भी मेरी है। सो दिस इज समथिंग दैट इज विद स्कॉर्पियो, यू हैव टू डू योर ओन ग्राइंडिंग थिंग, है ना। अपना देखना, सिक्स्थ हाउस एरीज लगाना पड़ेगा। व्हाट इज 1 and 6 का कनेक्शन? दैट इज अ कनेक्शन फॉर सर्विस आल्सो। ठीक है, तो सेवा या खुद का परिश्रम करने का कॉम्बिनेशन भी है। सो लर्निंग एस्ट्रोलॉजी यू हैव टू ग्राइंड योरसेल्फ लाइक until unless you won't get it। अच्छा, एक फंडामेंटल वो है, अगर 6-4 का कनेक्शन है तब हम बोल रहे हैं कि घर के लिए लोन लिया, लेकिन अगर 6-4 का कनेक्शन नहीं है, कुछ और एक्टिवेशन हो रहा है, तो घर तो बिना लोन के भी ले सकते हैं ना, डोंट नेसेसरली हैव टू। हाँ, नो, नॉट नेसेसरी विदाउट लोन। पैसा है तो तुम घर के लिए ले सकते हो, बिल्कुल। कब लेंगे वो अलग चेक करते हैं, और लोन लेके घर लेंगे या वैसे वो अलग, वो फिर उसके लिए 6 का कनेक्शन जरूरी है। जब मतलब वो फोर्थ हाउस किसी तरीके से, वो फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा, सिलेक्ट नहीं सी। trying to look for other combinations। कैंसर वर्गो में ही चल रहा था, हाँ। ठीक है, कैंसर की दशा चल रही पहली दिन। ठीक है, फोर्थ ओरिजिनल कैंसर की दशा है, उसमें वर्गो एक्टिवेट हुआ है, देखो 2017 में। ठीक है, अभी कैंसर में वर्गो का दशा तो वो साफ साफ है ना, 6-4 का रिलेशन स्टार्टिंग में बोला ना मैं तुमको। अब बताओ कौन किसके लिए लोन लेगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है। just by looking at, not looking at the time, just by looking at what's the combination of dasha we are running, you can just tell what is happening। ठीक है, and it will happen again and again, you know, और हर बार वो शुरू होता है। अब कोई सवाल पूछना, अब बंद कर रहे हैं अपन। ठीक है, ठीक है। तो हाँ, वरना 7:30 के ऊपर चले जाएगा जो भी होगा। So yeah, you guys need to work hard, like ना, start working hard। देखो तुम यहाँ तक आए हो मेरे साथ, ठीक है। You guys are like ना, जो कि बच्चे हो, धीरे धीरे मेरे को मालूम था ये, देखना धीरे धीरे people will be getting lesser because ज्योतिष सबको नहीं आएगा, that is very true। ठीक है, if I am committed to give this knowledge, तुम कब कमिट करोगे to take this, to receive it properly? ठीक है, so I am ready to give everything, like ना, मैं तुमको नक्षत्र भी पढ़ा दूंगा, I have no issue in that, but I will see to it कि तुम देखना नक्षत्र के लिए रेडी हो कि नहीं। और नक्षत्र के लिए रेडी होने से पहले पहले तुम्हें you will have to master this thing, और उसको मास्टर करने के लिए you have to do a lot, देखना एटलीस्ट 50 चार्ट तुमको लिखना विद इन, हर महीने तुम्हें एक एजेंडा रखना चाहिए। I need to do 50 charts। To do 50 charts every month, like a month, you need to do at least 1 chart every day। This way 30 days में तुम्हें एक चार्ट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये एस्ट्रो डाटा बैंक पे जाके करें, हम कहाँ करें? See, first Astro Data Bank is a very good resource, you can go there। But मैं जिस तरह से तुमको समझाया, विकिपीडिया पे जाओ, एक चार्ट उठाओ, एक पर्सन उठाओ, you will have a lot of list of details। You start with this thing of idea। अपने दिमाग में सोचो कि तुम्हारे जीवन में समस्या क्या है, एंड जस्ट लुक फॉर दैट, एंड क्योंकि वो तुम्हारे साथ ही नहीं होगी, किसी और साथ भी हो रही होगी। जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आइडिया, लाइक कोई डिजीज, कोई रोग, कोई शादी का इशू, कोई फ्रेंड्स का वो। ठीक है, स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्किंग ऑन दैट थिंग्स, लुक फॉर थिंग्स। इन दिस वे यू विल बिकम a bit of researcher, you will find out things, you will get to know at least जो लिखना, जो कर चुके हैं
उन पे तो हमेशा याद रहना चाहिए, जो ऑलरेडी चार्ट्स हम कर चुके हैं, कॉम्बिनेशन हम देख चुके हैं, दिस थिंग। या एक लास्ट चीज बताता हूँ, बहुत थिंग चीज है। सी I was watching today this thing of Meenakshi Amma temple. ठीक है, डिस्कवरी मीनाक्षी पे अम्मा। So मीनाक्षी अम्मा, हाँ, कुछ डिस्कवरी नहीं, पे, हाँ राइट राइट, हाँ डिस्कवरी पे। So डिस्कवरी पे मैं देख रहा था, so yeah, I would stop the recording